Hi friends, my name is Ranjit and our company website www.geniussoftwareservices.co.in. Today we will discuss about Python strings, assign string to a variable. Python strings are arrays, slicing, negative indexing, len method, strip method, lower method, upper method, replace method, split method, check string concatenation, format method, escape character. So these three things we will discuss. हम आज डिस्कस करेंगे और देखेंगे इन सब के बारे में. So now start from Python strings, right? So basic thing, आप स्ट्रिंग को डबल कोट्स और सिंगल कोट्स से सिंगल कोट्स output is hello. Now if you type in double quotes hello, output is hello. So you can say that अगर आप सिंगल कोट यूज करेंगे या डबल कोट यूज करेंगे डबल कोट स्ट्रिंग के लिए तो आपका आउटपुट सेम रहेगा. तो फर्स्ट बेसिक थिंग ऑफ पाइथन स्ट्रिंग. नेक्स्ट, असाइन स्ट्रिंग टू अ वेरिएबल, राइट. तो सपोज अगर आपको कोई स्ट्रिंग, सपोज एक्स इज अ वेरिएबल, आपको असाइन करना है हेलो, असाइन करना है हेलो स्ट्रिंग को असाइन करना है एक्स वेरिएबल में. अब आपको प्रिंट कराना है एक्स की वैल्यूज. सिंपली पुट एक्स, राइट. नाउ रन. So you can see that output is hello is printed, right? So simply x is a variable, hello is the string. स्ट्रिंग को आपने एक्स वेरिएबल में असाइन किया और आपने प्रिंट करा लिया, तो आउटपुट इज हेलो. नाउ नेक्स्ट, strings are arrays, right? Array, suppose you can say x, you can consider, take a string, suppose India is great. We take this string India is great, this is the string, and हमने इसको असाइन किया है x में, राइट. उसको आप एरे क्या होता है? एरे का जो इंडेक्स वैल्यू होती है ऑलवेज जीरो होती है. ऑलवेज इंडेक्स, एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो, राइट. सो यू कैन सी दैट एक्स इज द वेरिएबल, असाइन द स्ट्रिंग इंडिया इज ग्रेट. नाउ वी वांट टू प्रिंट एट द इंडेक्स वैल्यू ऑफ 2. We are just print at the index value of 2. What will the output? 0, I 0 and 1 D 2. So output should be D. You can see, आप देख सकते हैं आउटपुट इज D. एरे में इंडेक्स जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 से 0 1 2 3 4 फॉरवर्ड्स, right. So at the index location of 2, the D is present, so output is D. Now next, slicing में आप start index and end the index separated by a colon. आपको मेंशन करना होता है स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स कॉलन का यूज करके. Position 1 to position 4. If you are mentioning position 1 to position 4 will not included, right? The value at position 4 will not return in the output. Okay. Suppose this is the x is in India is great and print same, and we put here at slicing support 2
using colon 4, right? Start index is 2, colon end index is 4, right? So 4 index value will not be considered in the output, only it will consider from 2 to 3. 4 will not be considered in slicing, right? So now run. You can see di is printed, right? 0 1 2 at index value of 2 d is present, at 3 I is present, so di. Suppose 6, 2 to 6, what the output? dia, right? So in this way, the main things you have to remember, last index value will not be considered in the output. वो आउटपुट में कंसीडर नहीं होगी, जो लास्ट इंडेक्स वैल्यू होगी उससे जस्ट एक प्रीवियस 2 to 5 in this case will be considered. So this is slicing. Now next one, negative indexing. In negative indexing, index value of -1 gives the last element and -2 gives the second last element of an array. You can say that कि most of the programming do not provide negative indexing, but Python provide negative indexing. Means array start from the end, right? Normally array start from 0 from starting, but it is from the last. It will be start from the last. Like you can suppose in this case here, suppose you mention minus. So t is -1, a is -2, e is -3, r -4, g -5 in this manner, right? So this is the thing only. आपको बस जस्ट रिवर्स यहाँ से स्टार्ट होगा नेगेटिव इंडेक्सिंग. सो -1 you are mentioning -2, -4, right? So -4, right? Now run. -4 -2. Start index is -4, -1, -2, -3, -4, r, then -2, -1, -2, 2 will be so re printed. -2 will not be considered, right? So re printed. Suppose here if you see -4 and -6, suppose -2. Okay, you can see that output is re in this case. Now next one is string length. Use the length function. If you want to know the length of the string, just use this function. If you want to know this length of this string, just use len method. Now run 14, right? So it tells the length of the string. Now next one is string methods. Built-in methods, you can see that. First one is strip method. Strip method removes any white space from the beginning or the end. Any white space. Strip method. Like there is a space here. There is space here from its beginning. There is space in the end.
स्टार्टिंग में स्पेस और लास्ट में स्पेस है। अगर आपको इसमें स्पेस को रिमूव करना है, x dot strip, simply now run this. Space is removed. If you do not use strip, you can see the output of this program. Output, you can see that there is a space from beginning and end. So using strip method you can remove the space beginning and end. So this is the use of strip method. Now next one, lower method. Suppose lower method, in lower method, suppose it is in uppercase, all string is in uppercase. Suppose this is in uppercase, right? You want to convert in lower case, so just use a dot lower, right, and it will be converted into lower case. You can see that it is converted into lower case. Now next one is upper case. Suppose if it is in lower case, if it is in lower and आप इसको अपर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको जस्ट यूज द अपर मेथड, x dot upper. Now run. So it is now converted into upper, right? तो लोअर एंड अपर ने देखा। इसके बाद देखते रिप्लेस मेथड. Replace method replaces a string with another string, right? Like if you want to replace India, if you want to replace India by God, what is the output? God is great. So this is the use of replace method. हम रिप्लेस, यहाँ पे ये स्ट्रिंग है इंडिया, इसमें जो इंडिया इज ग्रेट में इंडिया जो है, इसको अगर आपको रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस मेथड का यूज़ करके इंडिया फर्स्ट पहले लिखेंगे, उसके बाद आप कोई भी दूसरी स्ट्रिंग लिखेंगे और उसको जब रन करेंगे तो ये आपका रिप्लेस हो जाएगा। आप आउटपुट देख सकते हैं, गॉड इज ग्रेट, राइट? सो दिस इज द यूज ऑफ रिप्लेस मेथड. एंड नेक्स्ट वन इज स्प्लिट मेथड. It splits the strings into substrings, right? Like if you want to, like in this case, if you want to split, in this case if you want to split from each, we are just splitting from each India and great, we are splitting from each, right? Now run. You can see India is separate and great is separate, both are splitted, right? So I split from is, right? So is the midpoint, from it is separated, India is separate and great is separated, so both are अलग अलग हो गए, split हो गए. Now next, check string. Check if a certain phrase or character is present in a string using keyword in or not in. Okay? अगर आपका कोई स्ट्रिंग है, अगर आप उसमें चेक करना चाहते हैं पर्टिकुलर फ्रेज या कैरेक्टर वर्ड उसमें प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसके लिए आपको इन और नॉट इन कीवर्ड का यूज करना होता है नॉर्मली, राइट? लाइक इन दिस केस, सपोज हियर दिस इज द स्ट्रिंग, लाइक वी वांट is in X, we are searching is present in this string. So now print by, right? So it will give the output true. You can see, because X is present is already in the string. Like any word not, if you run this,
then it output is false because not is not present in the string, right? Suppose is already present and we use not in, then it output is false because is present, that's why its output is false, right? Because not in बताता है कि इस स्ट्रिंग में अवेलेबल नहीं है, बट इज अवेलेबल है, इसीलिए इसका आउटपुट फॉल्स आएगा, राइट? नॉट इन, इनका मतलब इसमें प्रेजेंट है, इसीलिए ट्रू आएगा, प्रेजेंट है ऑलरेडी, राइट? सो दिस इज द यूज ऑफ इन और नॉट इन कीवर्ड, राइट? एंड नेक्स्ट स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन. सपोज स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, suppose one string India and second string suppose great, and you want to concatenate मतलब combine the string. Concatenate means combine the string x plus y, right? And you want to print z. Okay, right? So first string India, second string great, and in Z we are combining. I print the value of Z. Now run. So you can see India great, it is combined the string, right? If you want to add the space, add a space between them using, right, this symbol, double quotes. If you want to give the space, then use the double quotes and this. So it here you can see that they are like combined each other, right? If you want to give the space between them, then use this symbol double quotes, right? Now run this. You can see there is a space between India and great. So this is the difference, right? Now next one, format method, string format. इन नॉर्मली इफ यू आप अगर कंबाइन करते हैं नंबर और स्ट्रिंग, तो पाइथन में एरर कंबाइन नहीं हो, इट विल गिव द एरर, राइट? तो अगर आप नंबर और स्ट्रिंग को कंबाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फॉर्मेट मेथड यूज करना होता है, फॉर्मेट मेथड पाइथन में. जब आप करेंगे तो एरर नहीं आएगा, क्योंकि फॉर्मेट मेथड क्या करता है, टेक्स द पास्ट आर्गुमेंट एंड फॉर्मेट्स देम एंड प्लेस देम इन द स्ट्रिंग वेयर द प्लेस होल्डर, राइट? इस प्लेस होल्डर, ये दिस इज कर्ली ब्रेसेस, प्लेस होल्डर आपको यूज करना होता है, राइट? नाउ सी suppose x is 20, assign the string value, and y is x integer value, y is a string value, kilometer, right? And if you want to combine, right, you want to combine in y, just remove z, y, like 20 kilometer you want to print like output, then you will have to use a curly braces of place. You can see the placeholder, right? You can see, right? X is the integer value and y is the string value. You can see that. So it will be combined using curly braces. Here they are the curly braces, right? And y dot format method we will use, format method, y dot format x, right? So it will convert the x, format the x, right? So you can now run this 20 kilometer, right? So there is no error because we use the format method and curly braces placeholder for using in the string, right? So by using the format method you can combine number and string. Now format method takes unlimited number of arguments and are placed into the respective placeholders. Like suppose x is 1, y suppose x is 1, right, and y is 1000. X is 1, y is 1000, and z, put this value changed into z.
right, kilometer is equal to right, in this way. एक्चुअली हम चाहते हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. इट शुड बी प्रिंटेड, राइट, meters, right. We are just printing, right. So here we are use the two curly braces, right, x and y, the two integer value, and I applied the format method. Now run. So you can see the auto 1 kilometer is equal to 1000 meter, right. So in this, by using two curly braces or placeholder in the string, so we use the here multiple arguments, integer value, right. And one more thing here, you can see that you can use the index also. You can use the index also, like x, you can use 0, right, at the 0 index, at 1 index, at 1, 0 or 1, it will be the same output, right. So output the same output is here, right. So this is the use of format method. Now next one is escape character. Escape character is a backslash followed by the character double quote inside a string that is surrounded with double quotes, right. Escape character, if you want, like suppose if you want to use yes, great and popular, right. Here if you double quote the great, suppose, right, in this string if you double quote the great, and if you run this program, if you print x, then it will give the error, because syntax, that is the syntax error, right, invalid syntax, because within same string double quotes, आप double quotes use नहीं कर सकते, because all we are using double quotes here and another double quotes के अंदर आप double quotes use नहीं कर सकते इस तरह से, इसीलिए देखिए आप देख सकते हैं syntax error. तो अगर आपको ये इस तरह से यूज करना है तो आपको escape character यूज करना होगा, escape character you will have to use, right. If you run this, it will give the India is great and popular, you can see the double quotes here, right. So in this way you can use the escape character, right. So